ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। सिद्धिलक्ष्मीर्देवता मम समस्त दुःख क्लेश पीडा दारिद्र्य विनाशार्थं सर्वलक्ष्मी प्रसन्न करणार्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतापीत्यर्थं च सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्र पाठे विनियोगः। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णोमानन्दमध्यस्थां हिंकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययां सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं
दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते सङ्घे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णोमानन्दमध्यस्थां हिंकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययां सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थितां ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकां पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमं नरं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते
सङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णोमानन्दमध्यस्थां हिंकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययां सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थितां ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकां पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमं नरं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते सङ्घे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां
षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णोमानन्दमध्यस्थां ईङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययां सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकां पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमम् नरं यशस्यमायुष्यां वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते संघे देवकुले नरेन्द्रभवने गंगातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां
तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययाम् विष्णोमानन्दमध्यस्थाम् ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययाम् सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम् ओङ्कार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकां पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमम् नरं यशस्यमायुष्यां वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते संघे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययाम् विष्णोमानन्दमध्यस्थां
हिंकारबीजरूपिणी। ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी। ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी। तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी। ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी। आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययाम्। सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम्। ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे दलितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकां पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमं नरं यशस्यमायुष्यां वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके। राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते संघे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णोमानन्दमध्यस्थां हिंकारबीजरूपिणी। ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी। ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी।
तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययाम् सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते संघे देवकुले नरेन्द्रभवने गंगातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णोमानन्दमध्यस्थां हिंकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययाम्
सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसमप्रभां तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मां ब्रह्मरूपव्यवस्थिताम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखा दरिद्राः भयपीडिता जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभ्यते लक्ष्मी अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च साकनीभूतवेतालर सर्वव्याधिनिपातिके। राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रे हारिबन्धने अशेषभय सम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणः नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते संघे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला।